Welcome everyone. Today we are sitting with. Who are कितना we sitting with? धीरे बोल रहे हो? We are sitting with Anshul Srivastava. Srivastava. मिस बोलो. Miss Anshul Srivastava. हाँ, अरे नहीं क्योंकि नाम लड़कों वाला है ना. अच्छा वैसा. वैसे आवाज इसके तो लिए लड़कियों नॉट वाला बिकॉज है ऑफ ना? मिस मिसेस. हाँ आवाज तो लड़कियों वाला ही है ना? फिर भी नहीं क्योंकि मेरे साथ हमेशा होता है. मेरे साथ हमेशा होता है Okay, इसलिए. we will do this. Retake. अच्छा तो अंशुल शास्त्री आप फीमेल बेली डांसर बोल देना. क्योंकि मेल भी होते हैं ना बेली मिस डांसर. लगा देंगे हम. Miss लगाता हूँ मैं. Female belly dancer. नहीं चलेगा चलेगा. नहीं ठीक है. जैसा स्पेक्ट्रम है आज के दुनिया में. श्रीवास्तव. आज थोड़ा अलग-अलग genders के. सही है लोगों को हाँ, recognition आपको life पता है दुनिया में कितने genders हैं? 5 ही है ना. नहीं. 105. 105. मैं वो भी गलत हो सकता हूँ. That could be नहीं. 152. लास्ट मैंने 57 पढ़ा था भाई. 152. तो इंसान में जानवर भी होने लगे क्या? जानवर. You can identify as a एक final. मिनट ये जो आपने बोला है ना, लोग आपको कैंसिल कर सकते हैं ये बोलने पे. आइडेंटिफाई जानवर करने लगेगा. मत बोलना कहीं पे. मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी. It's not in India as such. इतना इंडिया में भी वैसा है कि जो अपना मुंबई वगैरह हो गया मेन मेट्रो सिटीज में क्या जानवर? नहीं जानवर नहीं फिर? people Personal identifying pronouns. as different genders. Personal अच्छा, pronouns. So you can identify as a he and she. people can't tell you anything. ऐसे ऐसा कुछ रूल नहीं है ना. हाँ. नहीं मेरा तो मेन रीज़न वही है. अंशुल नाम है लड़कों का. इसके लिए और कोई रीज़न नहीं है. Welcome to Petty Red Tapes. Today we are beginning with our first all news segment, the first episode of all news segment called Interview Tapes, and we are sitting here with Miss Anshul Srivastava, female belly dancer. सही बोला ना मैंने? Yes. And I have my co-host with me, Arnab Chakrabarti, and this is Anand Singh. Welcome, Miss Anshul. Hi everyone. Female belly dancer. Yeah, I am because it's a guy's name. That's why I have to put the title as Miss. You can say. So I आपको वैसा कभी हुआ है क्या सब? every time. क्या बात कर रहे Every time. I want to know about your experiences in school with this name. Not in school because school में सिर्फ 8 क्लास तक ही गई हूँ. उसके बाद I directly gave my board exams, 10th board, and did not go to college. So after that, I gave my 12th exam, and then सीधा BBA में admission हुआ. 9th standard and 11th standard. No, I did not skip. मतलब वो था. So only 12th is what, as in graduation नहीं हुआ है, only ग्रेजुएशन हुआ 12th. So 8th तक स्कूल गई मैं. 9th में थोड़ा बहुत स्कूल गई. एग्जाम्स वगैरह ऐसे दिए ना दिए हो गया. मतलब चलता है मतलब इतना उस टाइम पे. एक्सटर्नल तो मैंने भी 12th दिया है 2 साल कंटिन्यूस. तो वही 4 बार एग्जाम दिया था मैंने. बहुत मजा आया. नहीं मेरा academic adventures. Oh but academic. So you went to college after that? yes directly गाजियाबाद BBA. BBA. Why BBA? Because my father told me it's a very easy subject. I was a failure in my studies. I do not like silent. This is अरे ये हम लोग रखेंगे. ये सारा ऑडियो जा रहा है इसमें. I'm so sorry about this. Someone who was here for an interview My God. forgot to silent their own phone. वैसे मैं भी कोई वैसा नया वो नहीं हूँ. हाँ. So I'll also do the same. But he is conscious enough. हाँ. तो I always keep my phone in silent. अभी पता नहीं आज छुट्टी है तो. अच्छा. Nice ringtone. वाह. अरे We didn't even say कि हाँ भाई उसका acknowledgement हुआ ही नहीं था. मैंने कर दिया ना. चलो ठीक है फिर BBA. yeah. Because I was a failure in studies. मेरा मन नहीं करता था पढ़ाई करने का. Same here. Because I've been raised within my brothers and uncles. So मेरा nature भी tomboy वाला ही था. अभी भी है मतलब सिर्फ look change हुआ है. Okay. तो मैं हमेशा I was always into fights. I only had guy friends, लड़के दोस्त थे मेरे. ऐसे घूमना फिरना ये वो साइकिल से इधर उधर. Then somehow I passed my 10th exam and somehow I passed my 12th exam second try में मतलब second time में. Similar consequences. बस मैं थोड़ा ऐसे outgoing नहीं था. And then because
Like मेरी फैमिली काफ़ी एजुकेटेड है. Okay. My father is an ex assistant manager in SBI. Okay. तो he always wanted कि सरकारी जॉब लगे and all that. तो he wanted कि कुछ डिग्री वाला होना चाहिए और easy भी हो, स्पेशली सिर्फ मेरे लिए, because all my sisters they are engineers and all. So सिर्फ मेरे लिए कुछ चूज़ करना था. So they chose BBA and it was pretty easy. Then I thought चलो हो गया, पढ़ाई से पीछा छूटा. Then he said no, MBA भी करना है. I said okay. Then I did MBA. And उसके बाद बस हो गया. So why BBA? Because BBA बहुत easy था, except accounts. Okay. बाकी सब easy था. So accounts was the only tough Yes. part of BBA. Yes. How long was this course for you? कितने साल का कोर्स था? 3 years graduation. 3 years. उसके बाद आपने MBA किया? Yeah, immediately 2 years. 5 years of. And you won't believe, मतलब last exam जब मैं दे रही थी MBA का, हाँ. I think last subject था SDM, Sales and Distribution Management. ऐसा लग रहा था जेल से मतलब आज़ादी मिली है, मतलब सांस लिया जा रहा था, पता है. I was not able to breathe. ऐसा लग रहा था कैद हूँ मैं, मतलब I hate studies. But अच्छा, MBA was easy because MBA is just the explanation of BBA, so इतना कुछ tough नहीं था, अच्छा था. But MBA में भी ज़्यादा कॉलेज नहीं गए because it was the most not corrupted but क्या बोलूँ, मतलब या करप्टेड बोल सकते हैं, बिकॉज वहाँ पे सारे जाट गुजर्स थे तो स्ट्राइक कर देते थे, छुरा निकालना एंड ऑल दैट, वो सब होता था. तो सिर्फ आई थिंक एक सेमेस्टर में, या एक सेमेस्टर ही गई थी मैं. या फिर बाकी सब एक्सटर्नल है. एनीवे MBA सेकेंड ईयर में यू डोंट गो टू कॉलेज ज़्यादा. सो फर्स्ट सेमेस्टर एंड देन द एंटायर सेकेंड सेमेस्टर वाज स्ट्राइक कॉलेज में. या आई मीन जब भी लाइक ओनली टू रिटर्न द बुक्स, लाइब्रेरी में हम लोग जाते थे, या फिर कभी किसी ने बुला लिया कि MBA डिपार्टमेंट को एटलीस्ट छोड़ दो, वैसा. अदरवाइज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट वाज शट. मतलब वैसे 1 सेमेस्टर इज 6 months, 6 महीने के लिए कॉलेज बंद. हाँ, इंटरनल एग्जाम देते थे, नोट्स वगैरह देते थे, कभी कभी अटेंड कर लिया, लाइक हफ्ते में एक बार समथिंग, ऐसा था, मतलब नॉट रेगुलर. स्ट्राइक के टाइम पे तो फिर कंप्लीट नो लेक्चर्स नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ. नहीं, MBA वालों को कभी कभार अलाउ कर देते थे वो लोग. अच्छा. इंजीनियरिंग वाला था ना जो लाइक गुंडा था, ही वाज द इंजीनियरिंग स्टूडेंट, 4th ईयर का था. अच्छा. तो वही कितने साल फेल हुआ था वो? कितने साल से I have no idea. I was very scared of them. I literally. क्योंकि हम लोग भी जिस यूनिवर्सिटी में थे ना, वहाँ पर जो इंजीनियरिंग, He was into politics obviously. वगैरह जो था, उसमें भी लोग 7 वगैरह 6-7 से ऊपर आखिरी साल निकाल रहे थे. That I don't know because बहुत डर लगता था उनसे literally, because एक तो वो ग्रेटर नोएडा था, like proper हरियाणा, not हरियाणा but yeah obviously greater Noida was developing उस time पे in the year 2011. 2011, yeah, 10-11, yeah. You were in college. I was in 10th standard. I was in post-graduation. Yeah. So, after MBA, then what did you do? उसके बाद I started, because I did my MBA with marketing, so मैंने field work start किया. I used to work with Idea, SIM cards and all, corporate SIM cards, broadbands and all, sell करना. But मेरा skin tan होने लगा, so I left that job in 4 months. Field sales था ना. So you used to get those, वो क्या बोलते हैं, sheds? नहीं. So I used to go inside the offices, big offices, corporate offices, okay. because I was the only female, that's why. So I have an interesting story about that, but you continue. तो ये how did you get into the job? As in, was it from a placement kind of thing? No placement. You went and applied? Yeah, because sales is something which you can get a job in sales easily. Very easy. Yeah, because there is a target-based job. And I was able to achieve my target because I just had to sell SIM cards, broadband connection. वो already convinced रहते हैं customers, so that was problem नहीं. And corporate customer इतना झिक नहीं करता. तो कभी कोई सब झिक हुआ नहीं क्या? नहीं. I was female and then good communication skill, yeah. How long were you in this job of sales with ID? 4 months. Only That's 4 months? it. And then I joined BPO. What did you join? BPO, okay. Yeah. BPO is Business process outsourcing. I mean, not a call center, but it was just you can call it as an MNC, multinational company. Yes. And since then, it's been all BPO. Yes. All the jobs. Yes, since 2013, July 2013.
Yes. And how has the experience been in this field? Very good. Because I still remember I was very, I had a very, what should I say, बहुत low confidence था मेरा. I was very shy. बहुत scared रहती थी मैं लोगों से कैसे बात करना है, क्या है, कुछ गलत इंग्लिश तो नहीं निकल जाएगी and all that. But ever since I joined BPO, मेरा typing skills, navigation skills, like body language, because you know when you start talking to foreign customers, वो थोड़ा आ जाता है, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता है. बहुत आई गॉट टू लर्न सो मेनी थिंग्स, मतलब लाइक न्यू वर्ड्स, कल्चर कैसा होता है उनका. तो सो फार आई ओनली वर्क विद UK एंड US पीपल. नेवर एनी अदर कंट्रीज? बहुत कम. ऑस्ट्रेलियन बहुत कम, बिकॉज आई डिड नॉट कैच देयर एक्सेंट, ऑस्ट्रेलियन का एंड न्यूजीलैंड का. बट UK में भी देयर आर लॉट ऑफ एक्सेंट्स, देयर आर डिफरेंट एक्सेंट्स फॉर. ठीक था. आई वॉज एबल टू कैच, मतलब जो भी आयरिश वायरिश था ठीक था. इट वॉज ओके. इट वॉज नॉट दैट टफ. ऑस्ट्रेलियन वॉज अ बिट टफ. And basing on the type of customers, which was the easiest and which was the hardest, US or UK? For US, I have not worked with customers. It's just business to business. So I've only spoken with businesses. For UK, I've only worked with customers. So, काफी different experience. Yeah, obviously. Because when you talk to a business person, they will be professional. They cannot shout at you. Correct. They cannot force you. And customers like कुछ भी कर सकते, no call center. Of course. But again, I was very impatient. I mean, I was a very impatient person before I joined a call center. But I must say, मतलब UK वालों के साथ काम करके patience level बहुत बड़ा है मेरा. Trust. Yes. They try your patience big time. इतना चिल्लाएंगे. चिल्लाने से क्वेश्चन आ रहा है, ये ड्यूरेशन कितना रहता है इन कॉल्स का? मतलब for one call? हाँ, one call. वही मतलब it depends on bill explanation है तो like 3-4 minutes, not more than that. Yeah, maximum 10 minutes, not more than that. What was the longest call that you had to attend? 30 minutes, because it was a technical issue. Okay. The customer was not able to use internet or कुछ restart and all, उसका problem था. So the company which you are working for, what does it provide exactly? Which one, the current one or previous? No. The one you said was half an hour of a call for a technical issue. What does that company? Yeah, that was a mobile network provider, SIM card. Okay, so was it India based? No, UK. Okay. Will you be comfortable sharing the name just ऐसे? Yeah, obviously. Tech Mahindra, Commerce Zone, Yerbada. Correct. पुणे में है. Yeah, obviously. Before that, I was working in Noida, Barclays. Barclays card, credit card, customer services. So when did you move to Pune? June 2015. June 2015. Yes. And how long has it been since you've gone home? I went home in my sister's marriage, which was in 2020. November 2020. वो भी मैं गई थी 3 साल के बाद. उसके पहले 2015 के बाद. So it's now close to 3 years almost again. Yeah, अभी तो I don't think I'll go because it's too far. कितना टाइम लगता है? Bihar is too far from Pune. Train से it will take 48 hours. And flight से भी you don't have direct flight, मतलब मुजफ्फरपुर के लिए. वहाँ से change करो, ये है वो है, तो it's not pretty convenient and expensive and inconvenient. दोनों एक साथ. So if it's expensive and convenient, ठीक है, but it's expensive. So how's your family? How's my family? Yeah. Just a general question, as in, who is your favorite person? Who is your go-to person to talk to? If you were talk to no one. No. I'm not a family person. That doesn't mean that I hate my family or any family for that matter. I love them. Dhanyawad. Yes. I love them. I love them. Actually, I love all the families in the world. And for me, it's सब लोग same है. Like माँ होती है, पापा होते हैं, भाई होता है, सिस्टर होती है, चाहे वो रोड पे चलता हो, कोई सा भी हो. But obviously, my responsibility, are there towards them. तो वही है, पापा मेरे favorite हैं. But they both are equal because मम्मी के बिना पापा नहीं कर सकते, पापा के बिना मम्मी नहीं कर सकती. That's the thing. That's how it goes. So how was your childhood growing up? अच्छा था, बहुत बदमाशी वाला था.
I was the odd one because I don't know why. I mean, I was the odd one because my thinking was I never liked Indian culture. अच्छा. मतलब अगर कुछ पूजा वूजा होता तो मेरे को नहीं अच्छा लगता था, पता नहीं क्यों. Are you the middle child by any chance? हाँ, I'm the second one. तो How many siblings do you have? we are 4 sisters including me Oh. and no brothers. हाँ. तो वही है, मतलब अच्छा लगता था बट आई नेवर एंजॉयड फैमिली टाइम. अच्छा. मतलब मेरे को दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा अच्छा लगता था हमेशा, ऑलवेज. पूजा पाठ. आई डोंट नो व्हाई. नहीं, पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था बट वो जो लोग रहते ना, दादी दादा एंड ऑल दैट, आई डोंट एंजॉय देयर कंपनी. आई डोंट नो व्हाई बट आई डोंट. You were not into an audience in short. नहीं, मैं सिर्फ काम वाम करती थी, भारी सामान वगैरह, बिकॉज आई वाज हाँ, सो बिकॉज आई वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. आई एम स्टिल वेरी स्ट्रॉन्ग. उस टाइम पे आई स्टार्टेड वर्किंग आउट इन 2005. तो मैं छत पे पुशअप्स एंड ऑल करती थी. घर का खाना बहुत अच्छा होता था उस टाइम पे. सो आई वाज द वन, जब भी कोई फंक्शन होता था तो बोरियां उठाना 25 किलो की, 10 किलो की. ऑब्वियसली उस टाइम पे आई वाज 18-19, तो स्ट्रेंथ भी ज़्यादा थी. तो वही सब मैं भाग दौड़ में लगी रहती थी. बैठने वाला काम एंड ऑल, यू नो, सुनना एंड ऑल, चुगलियाँ एंड ऑल. आई नेवर एंजॉय दैट. आई नेवर डू दैट. आई डोंट डू दैट. Because ये पूजा पाठ ये सब होता है तो पीछे गॉसिप भी आई बहुत नो चलती है. आई नो. वो फिर चाहे घर में शादी हो या फिर सत्यनारायण की कथा हो. Exactly. So I was always involved in, you know, physical activities like घर का help करना, काम करना and all that. And how's your relationship with your siblings? Good. No fights? अच्छा था. नहीं, fights मैं ही मार खाते थे सिर्फ. क्या बात है? Yes. You just said like a minute ago you were doing push-ups. Strong. अरे but I cannot beat my elder sister. अरे not beat like Beat you is can defend yourself, not beating is. You hit them, you run away. That's नहीं. what my sister does. नहीं. She'll run and hide behind my father. नहीं. And when my father finds out what is happening, he'll be the first one to scold me. Yeah, मैं ही गलत. you're the brother. लड़के बेचारे. वो लड़की तो ठीक है, बात की बात है क्योंकि तुम बड़े हो. हाँ, वैसा वाला हो जाता है. नहीं वैसा फाइट नहीं हुआ. बट या मेरी बड़ी सिस्टर शी ऑलवेज यूज्ड टू बीट मी बिकॉज मैं बहुत बदमाशी करती थी. दैट्स व्हाई. बट कभी हाथ नहीं उठाया मैंने किसी पे. अच्छा. नहीं, आई कैन नॉट डू दैट. अभी भी नहीं. किसी में भी नहीं. वो एक है किस्सा. Okay. घर का नहीं, घर पे आई कैन नॉट, और एनी अदर किसी इंसान पे आई कैन नॉट रेज माई हैंड्स. पब्लिक में प्राइवेट में कभी भी नहीं. नोवेयर. आई कैन नॉट. To embarrass someone from family in public is the best thing. Because वो ऐसा scar बन जाता है, पता है? When you hate them, it's just. It's a joke. हाँ. नहीं, You don't have to do it. No, that reminds me because my uncle, my younger uncle, हाँ. पापा से छोटे हैं, he's into CRPF. अच्छा. He's I think inspector or something. तो हम लोग सेम मोहल्ले में रहते थे. देन नया मेरे को शौक लगा था स्मोक करने का. It was in the year 2005. What were you smoking? हाँ. What were you smoking? I don't know, red and white something. I think 2 रुपए का गोल्ड फ्लिक लाइट आता था तब. बहुत सस्ता था. तो उस टाइम पे शो ऑफ करने का बहुत था ना, मतलब आई वांटेड टू शो ऑफ. सी, और मेरे बिल्ड भी बहुत अच्छा था. आई वाज वेरी ब्रॉड. मतलब मेरा फिजिकल बिल्ड वाज बहुत अच्छा था. लाइक एंड मैं ऑब्वियसली इतने छोटे बाल थे. लाइक आई हैड अ हेयर कट लाइक जॉन अब्राहम बिकॉज आई वाज अ ह्यूज फैन ऑफ जॉन अब्राहम. उसके बाद आई यूज्ड टू वेयर लूज टी शर्ट जर्सीज उस टाइम पे. यू नो क्या बोलते हैं, एल्बो बैंड लगाना, या एंड देन रिस्ट बैंड्स पहनना, ड्रिंक्स पहनना. यस, बहुत है. सो मैंने कहा कि कोई फोटो होगा उस टाइम का? या आई डू हैव इट. सो I don't want to like put it out there, but I just want to see. नहीं है. So I was just, you know, smoking cigarette गली में, मतलब in the streets, and एकदम show off करके and all that, ये है वो है. And I did not cough. First time जब पिया ना मैंने, cough हुआ ही नहीं. पता नहीं क्यों. मतलब easily गया. And I didn't know कि मेरे अंकल पीछे से चल रहे हैं. तो घर पे बता दिया उन्होंने फिर. बट मेरे मॉम डैड, पापा तो कभी भी नहीं. पापा इज इंट्रोवर्ट. तो वो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मम्मी से बोलते हैं, फिर मम्मी मेरे से बोलती है. मम्मी ने कुछ ना बोला ना कुछ भी नहीं किया. कुछ हुआ नहीं. बोला कि क्या हो रहा है, तुम्हारे होठ काले हो रहे हैं एंड ऑल दैट, ये वो है, तुम चीज़ें भूल रही हो, ये हो कुछ समथिंग आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज बहुत पुरानी बात है. सिर्फ इतना याद है कि होठ काले हो रहे, क्या कुछ नशा वशा कर रही हो क्या. मैंने कहा कि हम क्या नशा करेंगे, क्या नशा करेंगे हम उस टाइम पे. या इनडायरेक्टली. अभी भी
Because उस टाइम पे I did not have much knowledge about cigarettes or alcohol or anything. तो ये हुआ था. But Interesting. my family. I think that is even scarier when they don't dare anything. ऐसे कुछ बोल नहीं रहा ये तो. This is But like. मम्मी पापा से बहुत मार खाती थी मैं. I was the only one. पापा जिसको बहुत पीटते थे. Because I still remember. पता नहीं कैसे याद है. मतलब मैं 5th standard में थी और something. बहुत छोटी थी. इरेजर के लिए पैसे दे दे 2 रुपए और समथिंग. उसका नॉट सिगरेट. आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड. टॉफी खा ली थी मैंने. एक्चुअली मैं चप्पल से मार खाया मैंने पीठ पे पूरा. इतना चप्पल से. That time you know I used to hate my parents so वो सब का होता है but ठीक है. The rebel times. बहुत मार खाया मैंने बहुत. मजा आया. Was it fun? Not at that time but अभी सोचती हूँ तो ठीक है it's okay, it's for good. Tell me something. I mean, having that in your life, getting beaten by your own parents. Again, for things like which you shouldn't have done. Do you think that prepares you for life afterwards? Yes, obviously. And how has it But changed only you? but not in this age. Sorry, not in this. What should I say? In this generation. Only for that generation. Only for that generation. Yes, 20 years ago. Because our times were different. Yes, obviously. Our times, you Yep. are way younger I than was me. I was beaten, dude. I am an 80s child. You were so 20 years back. I was like what 4 or something. Yeah. 50, yeah. So I mean, if time you से- remember. बहुत प्यार से. No, but ऐसे हमको ना बोल सकते थे पेरेंट्स. अभी गाल नहीं पे बोल हमको सकते. हमारे यहाँ नहीं मारते थे. वो सीधा या तो बेल्ट या तो चप्पल. नो मैटर वो लड़का हो लड़की हो. Extreme measures. बैक पीठ पे जो हाँ. ऐसे पूरे हाथ के वो पंजे मम्मी पड़ते थे. मम्मी का रहता था मुक्के. बहुत. अरे हाँ. तो मेरी मम्मी बात थी उनको हर बार हाथ में पता नहीं आज तक मैंने फिगर आउट नहीं करा. घर में इतने लोग थे. कौन छन्नी कौन देके आता था. छन्नी? She is either on this room or in another room. She'll have it. एक दो झापड़ पड़े. उसके बाद मैं ऐसे ऊपर देखा तो अरे ये कौन देख के चला गया. And then she's like अब तो तू गया. छन्नी. अरे लेकिन वो कैसा था कि it used to be 1 or 2 hits बस उसके बाद. तो छन्नी से मारूंगी तो शायद इसको लग जाएगा. And then फिर छन्नी फेंक के फिर again back to हाथ. So moving on, you've been in Pune since 2015. I think almost 7 years. 7 years completed. Yes. How did you get into belly dancing? I first saw Shakira in the year 2005. 2005. Wherever song. But I didn't know कि वो belly dancing है. अच्छा. So I heard the music. I mean, बचपन से ही I never listened to Bollywood or Hindi music. Only English music. बचपन से whatever music कुछ भी. What were your go-to artist? That time I don't know. उस time पे knowledge नहीं थी मेरे को. Because we used to live in a very small city. And mobile था नहीं, TV मतलब TV था but इतना वो नहीं था. Like availability कम थी. तो जो भी देखते थे HBO वगैरह देखते थे जो भी फिल्म्स वगैरह आते थे तो आर्टिस्ट का इतना नॉलेज नहीं था. आई शुड से आई डिडंट हैव एनी नॉलेज अबाउट आर्टिस्ट. सिर्फ शकीरा पता. हाँ शकीरा पता था. एनरिके इग्लेसियस और रिकी मार्टिन उस टाइम के जो है. हाँ जो टीवी पे आता था वही पता था. दैट्स इट. बिकॉज उस टाइम पे ना लैपटॉप वी डिडंट हैव लैपटॉप. आई मीन आई डिडंट हैव लैपटॉप मोबाइल फोन्स कुछ भी नहीं था. तो जो MTV पे आता था वही पता है. दैट्स इट. So Shakira was the beginning of how you got into belly dancing. Yes. And how did that come about? So when I moved to my graduation, मतलब college में in the year 2007, then I saw Sadie. She's a US based belly dancer. Then I got to know about belly dancing. What belly dancing is, where it got originated from. What's the meaning and all. Then I started researching on belly dancing. Steps क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है. In the year 2007. So the entire 3 years in college, I did belly dancing. I mean not belly dancing, मतलब Shakira because in my college again it was जाट गुजरों का college था. And वहाँ पे full clothes पहनने पड़ते थे. belly dance costume तो पहन ही सकते हैं. Correct. तो शकीरा के सॉन्ग पे ही करते थे. बट धीरे धीरे
समझ में आया कि हाँ बेली डांस होता क्या है. देन आई ओनली न्यू सेडी, दैट्स इट. I did not know because उस time पे India 2007 the technology were not that good. मतलब availability नहीं थी. Availability थी but we did not have that much money. एक सड़ा सा फ़ोन 5,000 का आता था. Sorry 10,000 का एक Sony Xperia था ना, क्या था that phone था. उस टाइम सोनी एरिक्सन भी बहुत चला. हाँ Sony Ericsson and all. तो again इतना नहीं था. But after my MBA there was a gap of I think 6-7 years in belly dancing. Because job start हो गया. Then I was into gymming, hardcore gymming. अच्छा. Working out, exercise and all that. वही था बस. Dancing सिर्फ clubs में चलता है. तो फिर पुणे में आके it all changed or something? Yes. पुणे में आके हाँ एक let me remember क्या हुआ था पुणे में आके. Because 2 महीने तक तो I did not eat anything. What? Because there was I mean not eat it as in मतलब खाना ठीक से खाया नहीं मैंने. अच्छा वैसा. हाँ. You were not eating well. I was not eating well. I was not eating at all. एक टाइम पे कुछ वड़ा पाव खा लिया because there was a huge shift in culture. Because I was planning to settle myself in Delhi. अच्छा. तो mentally I was not prepared. I was sent here पुणे. मैं आई थोड़ी ना भेजी गई हूँ. बॉयफ्रेंड के साथ कांड हो गया था. देन एंड ऑल दैट, वो सब झगड़ा लड़ाई. देन माय बॉयफ्रेंड कॉल माय मॉम एंड ऑल. देन माय मॉम स्टार्टेड क्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम. मेरा और दिमाग खराब हो. चप्पल से मैंने बॉयफ्रेंड को मारा. लाइक वी यूज्ड टू फाइट. देन तुरंत सारा सामान फ्रिज AC TV बेच के आई हैड टू मूव टू पुणे. चप्पल आई डोंट रिमेंबर. बोला आपने हाथ तो उठाया. बट या नहीं उसको लाइक नहीं वो भी करता था ना. इम्पैक्ट. हाँ वो पहले करता था. मैंने कहा अरे देखो कौन है मैम. आई एम अ जिम पर्सन यार. कम ऑन यू कैन नॉट हिट मी. आँख मुड़ के पीछे से लात मार दे. ऑब्वियसली सही बात. इतना तो ताकत है. ऑब्वियसली होना चाहिए. आई एम नहीं स्ट्रांग. मैं इससे चप्पल के पूछ रहा हूँ कि इम्पैक्ट के हिसाब से लगाने की नाक पे लगा था. एंड उसका चश्मा लगा था तो चश्मा का ये जो कॉर्नर होता है ना लाइक नाक पे ब्लीडिंग हो गया था. इंटरेस्टिंग. ही वाज आल्सो स्ट्रांग. तो मैं भी स्ट्रांग थी ऑब्वियसली. Strong personalities. Yes, obviously I'm still strong. Good for you. So getting back to belly dancing, how did you when you were sent to Pune? Yes. You were not eating well for 2 months. Yeah, almost 2 months. Yeah, like vada pav is still my favorite, so vada pav ही खाती थी मैं. वड़ा पाव the best चीज़ है दुनिया की. मैं खुद कॉलेज में अराउंड 7-8 महीने मैंने पूरा अपने आप पर बात कर लिया था वड़ा पाव में. आई विल शो यू द पिक्चर्स ऑन Instagram. वड़ा पाव से? हाँ, वेरी वेरी स्लिम. ऑब्वियसली वो ऑयल अच्छा नहीं होता है ना यार. ऑयल भी. और उसके बाद जैसा सेम थिंग यू वेंट थ्रू समथिंग डिफरेंट थिंग. आई वाज गोइंग थ्रू समथिंग एल्स. या एग्जैक्टली. तो उसके हिसाब से मेरा डाइट पूरा चेंज हो गया. सो दिन में से वड़ा पाव, उसके बाद चाय पे चाय. चाय इज अ डिजास्टर. अभी फिर से डिजास्टर चल रहा है. मैं दिन में वहाँ बैठे दिन में नहीं, शाम को कैफे पे अराउंड 4 या 5 since last 3 days. Without sugar? No, with sugar. तो मसाला चाय. The normal one, that becomes poison then. Oh yeah. Do it without sugar तभी अच्छा है. No, without sugar का तो addiction अलग है. I have a little bit of an addictive personality, so I get addicted to things very easily. But छूट भी बहुत जल्दी आती है सर. They disappear after a while. Nice. So you were not eating well for 2 months, and then how did you start belly dancing in Pune? How did you set yourself up? So I resumed my belly dance practice in September 2019. 2019. Because obviously I was never been a single person, so I always had a boyfriend, one after one. Breakup के बाद हमेशा कोई ना कोई रहता था. So the reason I resumed my belly dance practice is कि मेरे boyfriend के दोस्त का engagement था. अच्छा. तो वहाँ पे गई मैं, and that time I had good fat पूरे body पे because of my knee and shoulder injury I had to leave working out. I was not working out. Then वहाँ पे सब लोग डांस कर रहे थे and all that, मेरा पेट निकला हुआ था. I was feeling so inferior that time. It was in 2018. then मैंने कहा कि यार कितना घटिया डांस कर रहे यार ये लोग, इससे अच्छा तो मैं डांस कर लेते. ये वो एंड इमीडिएटली घर आने के बाद तुरंत मैंने डिसाइड किया कि नहीं, फर्स्टली आई हैव टू रिज्यूम माई वर्कआउट घर पे ही, एंड देन सब कुछ रिज्यूम करना है. तो वही
I started, I resumed the belly dance practice, and then I started researching more about belly dance, international artists. कि international में क्या follow करते हैं, because I was always not fascinated, but I was always क्या बोलते हैं, मतलब I was tend towards Attraction. leaning towards सही word है ना? leaning towards attracted towards But leaning more towards. leaning towards the So I was always interested in foreign culture, Hmm. mostly US actually. Okay. हाँ, तो इंडिया का मेरे को ज़्यादा कुछ सुनती भी नहीं मैं, एंड मन भी नहीं करता. अच्छा. सो व्हेन यू टॉक अबाउट बेली डांस आर्टिस्ट इन इंडिया, मैं नहीं देखते. Hmm. आई डोंट नो व्हाई, बट आई डोंट वॉच देयर डांस. आई डोंट फॉलो देम एंड आई डोंट वॉच देयर डांस बिकॉज मेरे को वो ऑथेंटिसिटी नहीं दिखती है. वो लाइक इस स्टेप का मतलब क्या है, बिकॉज मतलब मेरी चॉइस, इट्स माई चॉइस. ऑब्वियसली दे आर गुड बेली डांसर्स. आई मीन इंडिया हैज़ गॉट गुड बेली डांसर्स, बट अगेन मेरा नेचर हमेशा से लाइक इंटरेस्ट हमेशा फॉरेन डांसर्स की तरफ ही रहा है. अच्छा. Then in 2019 I started researching more about कौन से dancers जो famous हैं, what steps do they follow, what costumes they wear, what music do they listen to, उस music का क्या मतलब है. Then धीरे धीरे I started my Instagram account. एक साल में like I only got 4,000 followers or something. अच्छा. तो धीरे धीरे मतलब हो गया सब. And उसके बाद from the last 1 year, as soon as I lost my weight and I cut all my body, like excess body fat. उसके बाद I don't know कब like हो गया, मतलब belly dancer बन गई मैं अच्छी खासी. तो वही है, like it's been 2019, 2021, 3 years now, 3 complete years, yes. 3 years in the making. 3 years में professional belly dancer बन गई मैं. And what are all the places that you have performed in, different cities? So apart from Pune, I've only performed in Goa. Okay. It was a corporate event in March 2021, होली पार्टी था वहाँ पे. एंड देन उसके बाद लॉकडाउन हैपन, एज वी नो. उसके बाद आई परफॉर्म्ड इन बानेर एंड देन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड क्लब्स इन पुणे. सो And how's the experience been of the city? अच्छा था, बहुत अच्छा था. Are the people nice? हाँ, crowd is so I go to only those restaurants जहाँ पे crowd अच्छा है. Like they are big restaurants. Small restaurant cannot afford a belly dancer because the fees is pretty high, first of all. So अगर बड़ा restaurant है तो crowd भी obviously अच्छा होगा. The crowd is very supportive, first of all. No comments, no taunts, nothing. सीटियाँ वीटियाँ बजती, that is obviously normal, कोई problem नहीं है. But the support of crowd is really good. बहुत अच्छा रहता है. Like they मतलब cheer up करते हैं, then hoot करते हैं, hooting करते हैं, तो it's good. मतलब ऐसा वल्गैरिटी नहीं दिखता है. इफ आई सी द ऑडियंस, मेरे को कोई वल्गर नहीं दिखता है कभी. अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ. Mostly it's Sophisticated, yes, sophisticated. Plus they enjoy a lot. The recent one I performed in FML Seasons Mall, तो वहाँ का crowd तो काफ़ी अच्छा था. Like they were good, they were really sophisticated. काफ़ी अच्छा था. Like they मतलब आए, उनके साथ डांस भी किया मैंने and सब कुछ. कोई मतलब होता है ना वो, they don't touch, कुछ भी नहीं, सिर्फ दूर से देखते हैं, that's it. कोई छिछोरी हरकत नहीं. इवन इफ देयर वर ड्रिंकिंग, खूब सारी दारू पी रखी होती है सबने, बट कोई भी गलत हरकत नहीं. सो अभी तक तो अच्छा है. Yeah, it's good. And so the recent one that you performed was in FML. FML, yeah. Where are you performing next? Next, I guess in Pune, somewhere in Pune, I guess. I get inquiries, but they say that it's in Pune, but it could be a corporate event, private event, depends. Okay. Is there a story behind your first gig that you booked? No, there's no story. It was I was very fortunate because उस टाइम पे ना मेरे पास costumes थे अच्छे. मतलब that time in 2021, I recently started designing my own costumes. And मेरे पास That was going to be my next question. You design your own costumes. Yes. How did you got into it as such? Yeah. So there is a famous Ukrainian belly dancer. Her name is Alex Delora. She started designing her own costume, and I got inspired from her. Yes, and she is very nice. I mean, she has got लाखों में followers है उसको obviously, but she replies to all the questions. तो उसको मैंने पूछा कि what fabric do you use and all, so उसका guidance लेके I started designing it, and because सिलाई कढ़ाई मेरे को बचपन से ही बोल सकते हैं आता है, तो it's pretty easy for me.
And how much time does it take for you to make one dress? Like for One day. One particular one day. 12 hours. Up to like now, I'm not an expert, but yeah, I have become kind of an expert in costume designing and making and stitching. तो अभी 12 hours में हो जाता है. आराम से 12 घंटे. आराम से, yes. अभी मेरे को I have to make stitch 6 more costumes, so देखते हैं 6 दिन में होता है कि नहीं. Are you preparing for a show or something, or yeah? No, so what I do, I just make costumes and keep it with me. Okay. So for example, if you invest 10,000, on fabrics and materials, so you get 5-6 costumes, but वो आप पूरे 6-7 महीने तक यूज कर सकते हो. Because for one show, the minimum we get is like 12,000. तो वो तो obviously एक शो में निकल जाता है. Has like when the inquiries come for you to perform, have they ever said like for a particular color of costume or a particular costume that they have? No, so music and costumes we decide. Okay, that's been always been your call. Yes. सामने से तो कोई नहीं. ऊट पटांग. They don't. No. ऊट पटांग कॉस्ट्यूम के लिए नहीं, but मतलब बहुत छिछोरे लोग होते हैं ना, बोलते कि अच्छा 12,000 for a show and what else for sex and all. Like नहीं, you can contact other dancers. Sorry, thank you बोल के. I don't be rude with them because ठीक है, it's okay, it's the human mentality. I won't say Indian mentality, it's everywhere. Yep. So because the international dancer I follow, उनके पोस्ट पे जो कमेंट्स रहते हैं ना, सेम कमेंट जो अपने यहाँ रहते हैं. So it's the same. So it's a human mentality. So it's everywhere all the same. Yes. It's only a few people who are. Yes. I just tell them. So whenever I receive not a message but a public comment like this, कुछ ऐसा रहता है ना, तो I just reply to them कि इंडिया का नाम बदनाम मत करो. That's it. Because in my Instagram followers, I've got so many international followers, and वो सब देखते हैं. That's why. Because see, we represent India. Obviously, India का नाम बदनाम होगा. Indian men are like that. तो अच्छा नहीं लगता है ना फिर. And then I block them. Obviously, I have to. Yeah, I do block them, but I don't be rude with them. I don't have to be rude with them. It's okay. कोई बात नहीं. Overall, the experience has been everything. The experience has 90% is good. 90% is good in belly dancing so far. Yes. It's good. And it's good because it's a kind of exercise also. Physical workout. You don't have to go to gym. You just dance. You can make your own home. Yes. Yeah. अच्छा, ये जो WhatsApp पे जो status आता है, those positive words. Purity. Pure thoughts. More than positive, purity. Purity. Yeah. Dear Lord. मेरे पास बाइबल है पहले, अगर आपको चाहिए होगा कोई पढ़ना. I do have it in Hindi. छोटा वाला पॉकेट बाइबल. अरे बाप रे. बट उसमें हिंदी थोड़ा अलग है. सो आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड किस टाइप का हिंदी है. बिकॉज माई कैथलिक फ्रेंड गेव इट टू मी. अच्छा. तो अभी फाइनली कितने 5-6 साल बाद उठा के पढ़ूंगी अब मैं इसको. कैसे शब्द है उसमें? काफी आई डोंट नो, कुछ अलग. पुरानी हिंदी है थोड़ी. आई डोंट नो, कुछ अलग ही टाइप का है. मतलब पता नहीं. आई डोंट नो, देखना पड़ेगा. क्योंकि हिंदी लाइक सरल हिंदी नहीं है. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. कैसे वो शेक्सपियर की इंग्लिश होती है, जस्ट लाइक अपनी हिंदी थोड़ी अलग सी होती है. सो प्योर थॉट्स क्यों, कैसे, और व्हाई डू यू बिलीव इन देम? So I originally started listening to spiritual speeches in 2014 when I was in Noida. अच्छा. And what made me listen to that, I used to, I had a boyfriend that time. I was with relationship with him for 3 years. Okay. And उसके बाद I don't know, मतलब he was not helping me in my housework and all those things. And फिर job भी छूट गई मेरी, so I became a little frustrated. Then I joined another company. तो वहाँ पे my colleague, she used to listen to that, organization lady. So I was feeling very guilty to leave my boyfriend because we were about to get married. अच्छा. तो बट अगेन थोड़ा कास्ट वास्ट का पंगा था, तो थोड़ा प्रॉब्लम था. थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था. बिकॉज हिज मॉम केम टू माई फ्लैट एंड शी स्टार्टेड शाउटिंग. ज़मीन पे बैठ के, लोग गाँव के थे, वो ठाकुर थे. सो छाती पीट के मेरे बेटे को छोड़ दो एंड ऑल दोस फिल्म. या इट हैपेंड. एंड मेरे को ऑब्वियसली
मेरा तो वैसे ही ना ही था, मैंने ना बोल ही दिया था ऑब्वियसली, एंड ऑब्वियसली आई वाज रॉन्ग एट दैट टाइम। आई वाज फीलिंग वेरी गिल्टी, मेरे को बहुत गिल्ट हो रहा था, मतलब फिर हॉस्पिटल में भी गया एंड ऑल दैट, ब्रेकअप के बाद जो होता है, बॉयफ्रेंड मेरा गया। देन माई कलीग टोल्ड मी कि इसको सुनो, गिल्ट पे एक स्पीच था, देयर वाज अ स्पीच ऑफ 30 मिनट्स कि गिल्ट को कैसे दूर करना है या फिर क्यों आता है और कैसे होता है। सो आई हर्ड दैट लेडी, दैट स्पिरिचुअल लेडी दैट टाइम, एंड मतलब होता है ना, आंखें खुल जाती है, बहुत कुछ समझ में आया। आई एम स्टिल गिल्टी फॉर दैट, बट अगेन थोड़ा रिलीफ मिला, आई गॉट रिलीफ आफ्टर लिसनिंग टू दैट स्पीच। तो 2014 में मेरे को समझ में आया कि यार दिस इज़ द ऑर्गेनाइजेशन जो स्पिरिचुअल सिखाते हैं, स्पिरिचुअलिटी का क्या है एंड ऑल दैट, मेडिटेशन। देन उसके बाद सुनना बंद कर दिया मैंने, स्टॉप लिसनिंग टू दैट, बिकॉज फिर नया बॉयफ्रेंड बन गया तुरंत। So I was happy. Cycle repeats. It's not the cycle. It's like spirituality can take a break. I am in love. नहीं, ब्रेक नहीं था, there was not a single day break. मतलब वो था ऑलरेडी, मतलब so whenever I know कि हाँ there is a breakup, मतलब होने वाला है, there is a I'm about to, हाँ बैकअप भी रहते नहीं, मतलब वो मेरा मन उब जाता था, मतलब उस टाइम पे, अभी नहीं, अब तो I'm pretty mature. This is what happens with today's kids who are the early teen years में। But there is no love. Love तो छोड़ दो, उनके साथ ये जो एक्सपीरियंस होता है ना कि I'm getting bored, fuck it. Because एक दूसरा रीज़न इसका ये भी था ना, because मतलब मैं इंग्लिश मूवीज इतनी ज़्यादा देखती थी ना कि I was so much influenced with their culture कि मतलब वहाँ पे कितना इजी है, सब कुछ छोड़ो, ये करो वो करो, सब कुछ। हाँ नहीं है, हाँ मतलब जो हम लोग को मूवी में दिखाया जाता था, whatever we saw in the movie, अभी रियलिटी क्या है वो नहीं पता, बट तो ठीक है, कैजुअल है, चलता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट हाँ, whenever I used to do a breakup, सब अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल ब्रेकअप होता था, so it's fine, like ठीक है, कोई बात नहीं। So when did you get back to it again? हाँ, so I got back to listening to spiritual speeches in the first lockdown, March 2020. Then I started listening to them in deep, in depth. Then they said कि नॉनवेज क्यों नहीं खाया जाता है या whatever जो भी है, मतलब इसका मतलब क्या है, whatever I listen to, सब मैंने, so I thought कि चलो देखते हैं करके what happens. So when I when I started listening to the spiritual lessons again, at that time I had a big ego, especially female ego, or ego, you can say whatever ego I had, and I used to smoke, I used to drink beer, no hard drinks, only beer, and I used to end relationship like this, ज़रूरत नहीं है निकलो। हाँ, यस, भले वो फैमिली वाले हो, मौसेरा हो, चचेरा हो, दोस्त हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, आई डोंट नीड यू वाला एटीट्यूड था, सेल्फ सफिशिएंट, अब तो अभी भी है, बट ठीक है। तो ईगो वॉज द मेन, ईगो एंड एंगर मतलब, एंड आई वॉज नॉट अ गुड लिसनर दैट टाइम, मैं सुनते ही नहीं थी, अगर एक वर्ड भी बोला कि तुम ये हो, निकल जाओ घर से, गेट आउट, आई डोंट वांट टू लिसन टू एनीथिंग इसके बाद। सो आई डिड नॉट यूज टू गिव एनी सेकेंड चांस टू एनीवन। हाँ, तो when I started listening to this again, spiritual lessons, speeches, तो so I started implementing that. So firstly I quit smoking, drinking and non-veg food and outside food, ये 4 चीज़ें। So अच्छा था, मतलब एंगर थोड़ा कम हुआ, थोड़ा नहीं कम ही हो गया, एंड अभी आफ्टर 2 years एंगर इज नो मोर, मतलब 99.99% ख़त्म हो गया है। No, do you use any slangs? हाँ, I avoid using that. अभी तक तो यूज़ किया नहीं मैंने, I don't know. कितना टाइम हो गया? Last time? नहीं, किसके साथ बात करें? Because I live alone, I don't have anyone to talk to. घर वालों के साथ obviously I cannot use. घर वाले पापा गाली देते हैं, but and I presume that you won't be abusing your rabbits. No, of course not. Of course not. So पहले I used to मजाक में कॉल चूतिया है क्या, ये है वो, बिकॉज चूतिया मीन्स, बट अभी नहीं आता है वो, ऑटोमेटिकली नहीं आता है वो, जुबान पे वो शब्द नहीं आता। क्या बात है। Yes. Do you listen to Middle Eastern music for your belly dancing? And Obviously.
I have to, and I love that music. Yes. Do you उसी follow song any पे तो artists from dance. there as well? Artist मतलब there is a Darbuka player, अच्छा. Artem. His name is Artem, Artem. Last name पता नहीं, I don't know how to pronounce the last name. He's from Ukraine obviously. Okay. तो वही है, मतलब I don't follow particular artists but I love their music. Songs जो होते हैं या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो, इट्स मोस्टली सिमिलर टू इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स. जो शहनाई होता है वो इजिप्ट का है, मतलब इजिप्ट में कुछ और बोलते हैं उसको, वो यूज़ करते हैं. तो अच्छा है, लाइक So I love their music. Those songs during performances. Yes, because उसके बिना वो फील नहीं आएगा ना फिर. द स्टेप्स जस्ट लाइक हिंदी सॉन्ग में कैसा स्टेप अलग अलग होता है, तो लाइक बेली डांसिंग में भी म्यूजिक के साथ वो स्टेप्स होते हैं. पर्टिकुलर म्यूजिक में कैसे कथक में ताल 4 ताल है तो सब कुछ स्टेप होते हैं, तो उसमें अगर कुछ अलग म्यूजिक है या फिर ढोलक या कुछ ऐसा है तो उसका अलग स्टेप है. देयर इज अ डेजिग्नेटेड स्टेप फॉर दैट, सेपरेट स्टेप फॉर दैट. तो वही है. So why are you continuously spreading good thoughts? I don't spread good thoughts. Torch bearer of What? positivity. So it's just WhatsApp status. I don't discuss like You don't in do that public. for Instagram? नहीं. It's usually you performing on songs. That's it, right? Those are the only videos on Instagram. हाँ, that's my professional account. So उस पे I mostly post my workout stories और costume वाला and all that. वही है. WhatsApp. So ये किसी को ऐसे inspiring ये जो thoughts हैं काम है? I don't know. You never had any? No, but Because I don't have any friends here in Pune. अच्छा. from what I have seen, she has been questioned a lot. हाँ, वो उनको तो पता है. पूछा बहुत जाता है कि आप क्यों करते हाँ, so the reason हो? I think you get a lot of backlash, Like that? The reason- Rather question. but in a very negative way. Like you see, we are also questioning her, लेकिन वैसे नहीं ना. We want to know. वो लोग जानना नहीं चाहते, वो लोग implement करना चाहते हैं, मत कर. ऐसा. I'm talking that kind. So the thing is, the reason I put that story, can we stop questioning on other people's eating habits and all, etc. etc. Because कभी भी मैं, for example, lunch break होता है ऑफिस में, अरे वेजिटेरियन हो क्या, ओ अच्छा घास फूस एंड ऑल. सो अर्लियर लाइक 2 years ago I used to रिटेलिएट या रिएक्टेड, मतलब बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर जाती थी मैं. अभी ठीक है, इट्स ओके, माई चॉइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट्स ओके. Like mellowed down since. हाँ, yes, definitely. It has helped me a big time because अकेले रहना and with no friends at all in Pune, जिससे फ़ोन पे भी बात नहीं कर सकते, हैंग आउट करने के लिए भी कोई नहीं. आई डोंट हैव एनीवन. So is that a choice or because of the job? नहीं, neither. It's just circumstances. I'm a big time extrovert. क्या बात है? हाँ. No, that is why I am asking that. It's not a choice and not because of you may say because of shift timing. Not every day you can hang out with people, but at least on weekends. कब तक कैफे में बैठूंगी मैं? सही बात. See, I'm a club person. अगर कोई उसका नहीं मिला मेरा, and when I used to live in Delhi, वहाँ पे सारे वैसे ही थे. So हम you कितने always घंटे know. बैठते हैं? हम लोग 7 बजे पहुँचते हैं और Cheers. 11 बजे तक बैठते हैं. 11 बजे तक घर आ जाते हैं. 10:30. हाँ, so 10:40. 3.5 घंटे. Every single day. अच्छा, every single, मतलब मैं Bliss Cafe पे हाँ. on See, weekend. you have your place. on weekend I go to Bliss Cafe NIBM. तो वहाँ पे for example if I went there at 1 o'clock, वहाँ से 10 बजे रात में 11 बजे हम लोग निकलते हैं, क्योंकि Bliss Cafe के customers they know each other. अच्छा. Not know each other like पहले से जानते हैं, वहाँ जाने के बाद they see each other every day. and उससे कुछ कॉमन इंटरेस्ट निकल जाता है. देन कोई भी आके कहीं बैठ जाओगे, हाँ बैठो, वो गया तो फिर कोई और आ गया, वो गया तो कोई और आ गया. सो इट्स लाइक दैट. यस, या फिर अकेले. सो इट्स अ वेरी नाइस जॉइंट, वेरी लाइवली. बहुत. यस, ठीक है, मतलब ओनली ऑन वीकेंड्स, बट अब तो ठीक है. So mostly how does your day look like? How does your day begin? What do you do the entire day and how does it end? Yes. So as soon as I wake up, I start my workout. After brushing my teeth, obviously. After all those rituals. No shit.
Yes. After following all those rituals, daily rituals, brushing my teeth and get freshen up and all, then I immediately start working out because उसके बाद when you work out, then पूरा the entire day, you are energized. तो वो आदत हो गई obviously. It has become a part of my life. And I recently started doing meditation, so 5-10 मिनट जो भी है सुबह या फिर जब भी टाइम मिले तो वो कर लेती हूँ मैं. And then I do my breakfast, like I not cook but I have like dry fruits तो थोड़ा बहुत बना लिया. And that's it. I go to office, I come back and cook food and then sleep. That's it. That's all I do. No TV, no laptop. I don't have a television, no laptop, no social media, no news, nothing. I've stopped everything. So but YouTube is good. So. YouTube's the only place. Yes, भाभी जी घर पे and all that, so I watch. क्या शो है? No, I like that series because वो अच्छा है. उसमें कुछ the only negative thing is affair का है. बस यही. But वो serial में detach होके देखती हूँ. I just detach myself. I just watch. So that is kind of like your cheat thing. No, not cheat. It's entertaining, but I don't implement that into my personal life because कभी मूवी देखते हम रो देते हैं ना. Why? तो भाभी जी घर पर देख के रोना आएगा. नहीं, हंसना आता है, but again उसमें इतना कुछ है ना कि उसमें इतने अच्छे से डबल मीनिंग जोक्स है ना. अभी तो बहुत ज्यादा हो गया है. और ज्यादा अभी वो भाई मैं आज एक क्लिप देख रहा था उसमें. सो भाभी जी बोलती है अरे बबूदी जी आप यहाँ से जाइए, हमें मसाला पीसना अपनी मैक्सी में. तो उधर मैक्सी नहीं मिक्सी होता है. भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? The writers on that show are the best. This is what I'm saying. इंडिया में अभी ये जो हो नहीं रहा है ना, जो यूएस में हो रहा है खासकर, what you can say, what you cannot say. A few people are like saying you cannot say that. It's not like a state rule or something. But in India, it happens on Twitter. Twitter is like the toilet of the internet. वहाँ सब कुछ होता है. I've heard that. But still, for that show to exist on Indian television, I'd still do good. I'd still do double meaning jokes. It's the greatest. And there was another show, May I Come In, Madam? Oh, yeah. that was. You remember that scene where she is completely dressed? क्या जाती है वो? हाँ. और वो बोलती है कि आप मेरे लिए कुछ कपड़ा लेके आएंगे क्या? अच्छा, the first episode, I think the initial episodes. So there are. कपड़े तो चलो भाभी जी में तो there are no scenes like that, but May I Come In, Madam में scene भी थे. हाँ. And I don't know, वो बोलती है कि what is साजन ना, मिस्टर साजन देखो मैं रस्सी को उधर स्किपिंग कर रहा हूँ, उसका स्लो में दिखा रहा था. अरे वो बहुत. वो भी that was also a good show. No, so these are some shows जिसके all the actors are perfect, all the actors, especially the accent जो proper UP का accent होता है ना, because I know I have lived in UP, तो वही proper like accent है. हाँ, एकदम. उसका भी अलग से स्पिन ऑफ आया था अभी. बहुत सही शो है. बहुत सही शो है उसके. Because Anshul Singh was also in FIR serial because I'm a big fan of FIR. FIR was a good show. So they are actually versatile. मतलब वो कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी एक्टिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्सेंट पकड़ सकते हैं. So good, मतलब they're really nice. अरे ये भी था ना एक अच्छा शो था, चिड़ियाघर याद है? चिड़ियाघर, यस, चिड़ियाघर. गदा प्रसाद. गदा प्रसाद तारक मेहता का उल्टा चश्मा, संस्कारी सीरियल. सर तारक मेहता में भी वो है एक. नहीं ठीक है, ठीक है, it's not that अब तो लोग सब खींच रहे हैं वो शो. हाँ, the actors are leaving ना. I think this guy left. What is the guy who plays Tarak Mehta? I forgot. अच्छा वो he's a very good. Yeah. I don't remember his name, but वो अभी कपिल शर्मा में आया था. काफी अच्छा है वो. He's coming up with a new show. अच्छा. Reality show है. काफी he's a good writer और poet है ना, क्या है poet? हाँ, he's a poet. He's a very good orator. So speeches वगैरह. हाँ, कुछ तो बोला उसने माँ के ऊपर है. I started crying. सब लोग रोने लगे. माँ के ऊपर something he said. मतलब a long poem or something. अच्छा, he narrated he wrote the poem. बहुत अच्छा था. एमबी में एक जगह कटनी करके, तो कटनी से couple of I think 100 किलोमीटर्स ऊपर एक छोटा सा टाउन है कैमोर करके. Okay. जो कि वहाँ पर मेरे नाना थे. That's where I was born. So वहाँ पर वो आया था एक बार during ये दशहरा. He's very talented. Very talented. And he looks young, but उसका बच्चा is like I think
18-20 years का है, समथिंग ऐसा. आई डोंट रिमेम्बर कपिल शर्मा. मैं तो उसका बच्चा बहुत बड़ा है. हाँ. एंड ही लुक्स वेरी यंग. आई मीन He looks very young to you. नो नॉट टू मी. मतलब एज पर हिज एज, जितना बड़ा बच्चा है ना उसका, अच्छा वैसे. हिज स्किन इज लाइक comparison प्रीटी. मतलब जवान है उसका लड़का या लड़की जो भी है. अभी रिसेंटली है. यू वॉच दैट कपिल शर्मा का शो, उसमें आए थे वो लोग. नहीं वो तो. हाँ नहीं उसमें आया था. मेरे से जाता नहीं है. कपिल शर्मा वाज वन आई ऑफ द ओनली शो हु वॉच यूज्ड टू दैट डू शो बिकॉज उसमें वो बाकी जो को एक्टर्स है ना, कीकू शार्दुल. कीकू शारदा इज माय वो भी ऑल टाइम FIR. फेवरेट. या वो भी FIR. ऑल टाइम फेवरेट. Greatest. या ही इज, मतलब उसका एनर्जी लेवल. this Kapil Sharma show was another show who used to do which used to do this double meaning jokes starting में. हाँ. अभी नहीं करता. केसेस का नहीं. कपिल शर्मा को उसमें देखना अपना कॉमेडी सर्कस में. Dude, he used to kill that. He used to kill. कॉमेडी But he's सर्कस और ये सब spontaneous. शो में आते थे. लाफ्टर चैलेंज. So comedy circus तो was this Kapil Sharma, Anshul Srivastava जो लाफ्टर चैनल में करता था, and then there was this guy सिद्दीकी. I forgot his name. उसका सरनेम सिद्दीकी था. Dude, he used to do some comedy, man. He was from Pakistan, पक्का. तो I remember. नहीं था वो पाकिस्तान से. I remember. के एक्सेंट अच्छी. But he used to do so इतना so गाली वाली कुछ नहीं obviously उस टाइम पे कहाँ गाली. But दो जो पंचेस वो लोग मारते थे ना, and that guy used to do that in Urdu. ऐसा वो जो language है ना, वो fuck, it was so good. It is a sweet language. So YouTube. जुबा. केसरी. Not केसरी. अच्छा. जुबा. तो फर्स्ट चीज आपने ट्राई की थी वो सिगरेट थी. Yes, in my नशा hometown. में. In my hometown. And then after that. Then first time I had beer in 2014. Okay. Alcohol. उसके बाद कम था. मतलब when I was in Noida, we only used to do house parties. तो कम थे. beer का intake कम था मेरा. अच्छा. पुणे में आने के बाद ज़्यादा हुआ है. 2015 से of course. You काफी gave up अच्छा खासा alcohol in. वेट बढ़ गया था. लाइक आई पुट ऑन वेट एंड देन बाहर का खाना एंड ऑल दैट. तो When did you give it up? Alcohol? March 2020. March 2020, right after the lockdown. I still drink it. मतलब very rarely. बहुत रेयर. बहुत रेयर. कभी मन किया आपके पास तो अगर- नींबू निचोड़ के उसके अंदर. ओह. हाँ यस. ओह. उसके बिना नहीं. आई डोंट वांट एनी नशा. अभी मैं गाली देने वाला था. काफी पवित्र. काफी पवित्र है ये इंटरव्यू. काफी पवित्र है. डियर लॉर्ड. So अच्छा. हाँ कंटिन्यू. I was asking if there's any formal training for belly dancing, and would it have helped you if you would have gone through that, if it exists? Are you going to train? So I'm not going to train. especially for, because belly dancing is a little different than other dance forms, because इसमें you have to be flexible. Without Yeah. flexibility you cannot. I've seen your stories. He's showing you right now उसकी flexibility से हाथ ऊपर जा rहा है उसका पूरा. So your pelvic should be flexible, your chest should be flexible, ribs I'm and not all. doing shit. ठीक है. Show her your hands. अच्छा this one, yeah. ठीक है. How small and very ऐसा कितने Yeah, so similar hands. Girly hand. नहीं, this is not a step in belly dancing. ठीक है? obviously this is not a holding your fingers. You are saying see this, वो मैंने finger उल्टा flexibility करके. बता रहा हूँ मैं. हाँ, तो ये flexibility नहीं चाहिए. So ये जो finger को ऐसा touch किया ना, So you I have used to to be a bend. gymnast. So it's okay. I am flexible. Gymnast है, swimmer है. एक चीज है, लास्ट कब किया था क्या gymnastics? प्रैक्टिस? हाँ, बहुत टाइम हो गया, but I can still do the main. नियम, संयम एंड नियम. So ऐसे cartwheels then. So for jump example, spin. I am a belly dancer, and so now no, I'm not an expert, but kind of a perfection आ गया थोड़ा सा. But अगर practice नहीं किया तो even big artists अगर नियम का पालन नहीं किया या proper डेली किया नहीं तो फिर उस आर्ट का कुछ मतलब लाइक क्वालिटी का कुछ होता नहीं है. लाइक यू हैव टू प्रैक्टिस दैट ऑब्वियसली. यस. जिमनास्ट. Yes. Practice. He has a body that can do well on stage. रबर पूरा मुड़ जाएगा पीछे से. ऐसा भी नहीं है. स्पाइन, फ्लेक्सिबल Can स्पाइन. you touch your heels ऐसा पीछे जाके? हाँ करता था मैं पहले. योगा में. बोलो ना सबूत सारे हैं. नियम. पर आप बस इसको सजा देना है. और आप so again. Practice. So is there any formal education in it? Just the flexibility training.
अच्छा बस दैट्स इट. फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग एंड थोड़ा सा इमोशन, मतलब इमोशन एज इन फीलिंग्स, वो तो घर पे भी कर सकते. क्योंकि डांस बहुत सुंदर होता है. क्या घर पे फीलिंग्स और फ्लेक्सिबिलिटी तो घर पे कर सकते हैं. हाँ, आप कर ही रहे हो. फीलिंग्स बहुत, इंटरेस्ट, द मेन थिंग इज इंटरेस्ट होना, पैशन होना चाहिए. But yeah, to become a belly dancer, you have to have a flexible body. उसके बिना होएगा ही नहीं. So if you अदरवाइज वो सिर्फ बॉलीवुड भी नहीं दिखेगा, बट वो अजीब दिखेगा, मतलब हाथ पैर ऐसे करना है ना, ऑल दैट. कमर वमर हिलना चाहिए ना यार, ऑब्वियसली. ऐसे कॉस्ट्यूम क्यों बनाए गए हैं? सो दैट पेल्विक का मूव हाईलाइट हो, मतलब विजिबल हो सबके लिए. ऐसे टॉप्स क्यों बनाए गए, सारे ज्वेलरीज क्यों होते हैं उस पर, ताकि वो दिखे कि हाँ मूव हो रहा है दैट पार्ट. वही है. हाँ. So if I cannot touch my toes without bending my knees, I won't become a belly dancer. ऐसा है? You can. योगा नहीं You कर रहे will हैं. become a belly dancer, but you'll get injured. अच्छा. Obviously. How come? Forget belly dancing. कोई भी physical रनिंग स्टार्ट कर दो. If you don't do stretching, तो injuries तो आएगी ना. किधर है शो? Do you have a pen or something? अपने clients को, yeah. So see, this is your body, ठीक है? And this is stiff. ठीक है ना. अगर तुम चल रहे हो, कुछ कर रहे हो, या फिर झुक रहे हो कुछ उठाने के लिए, तो फट से टूट जाएगा ये. हाँ, नॉट द लाइटर, द बॉडी. यू विल गेट इंजर्ड. ओके. एंड फॉर एग्जांपल, दिस इज द वायर, दिस इज योर बॉडी. डू लाइक दिस, डू लाइक दैट, ना कुछ नहीं होगा. बेंड करो. आई विल गिव यू अनदर वन. So just a joke. Flexibility is required to become a dancer. Not only belly dancer, to become any So do you anything that requires any sort of physical dancer? Yes. Do you Even ever- martial arts, कुछ भी हो, like it Have you done needs. martial arts? Yes. When I started in 2014. Kickboxing. Noida Stadium में, not kickboxing, proper martial art. तो उस टाइम पे ही मेरा knee injury हुआ था. So I attended the class only for 1 month. एंड वो बहुत निर्दयी थे वो लोग, पता है क्या? नेपाल के थे सारे, पता नहीं कहाँ के थे. नकल पुशअप कराते थे, और नोएडा की ठंड लाइक 2 डिग्री 3 डिग्री वहाँ पे रहता था उस टाइम पे. घास पे पूरा ऐसा नकल्स यूज टू ब्लीड, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं. बट वो जज्बा था ना, जज्बा बहुत था मेरे अंदर, बहुत मज़ा आता था. तो वही 1 महीना अटेंड किया, देन आई गॉट दिस नी इंजरी. उसके बाद फिर छोड़ना पड़ा मेरे को. अच्छा, वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग के सेशन पे हुआ. यस, बिकॉज जिम भी, मार्शल आर्ट, सब कुछ एक साथ हो गया. तो Your body gets tired. बट जो enthusiasm था, it was so high कि मतलब बॉडी की थकान का कुछ मैटर ही नहीं. लाइक कोई वैल्यू ही नहीं थी. थके हो ना हो, करना है तो करना है. यस. होता है ना वो जज्बा. तो ये लोग क्या आर्मी में बना रहे थे? नहीं, नॉट आर्मी. आई मीन लाइक नहीं, आई वाज. Were they seriously from Nepal? हाँ, they were from Nepal. तो वो ले जाते नेपाल के, बट उनका वो पूरा जापानीज वाला फॉलो करते थे. जो भी उनकी गिनती वगैरह होती है, जो भी है, दैट दे यूज्ड टू फॉलो. अच्छा था बहुत. नॉट आई थिंक डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर लर्निंग. मतलब मार्शल आर्ट में बहुत सारा कराटे था. वो कराटे था ना. हाँ, तो जापानीज है ना, तो it was karate. It was nice. अच्छा था. Where do you want to be as a belly dancer? Like have you set an aim like कि मेरे को ऐसा best in India, international best, world best, कुछ ऐसा? नहीं. I don't believe in competition, so I just want to entertain people. That's it. I want to dance with like famous belly dancers in Dubai, Europe, Russia. That's it. That's what my aim is. I just want to dance on stage with grace. Obviously, yes, grace should be there. Otherwise, बहुत vulgar दिखेगा. Yeah, it looks vulgar अगर grace नहीं होगा तो. एक एंगल इधर और वो बार डांस Because बन the जाएगा. costume is like that. अगर if you see that costume, normally अगर आप if you don't have any knowledge about belly dancing, अगर costume को देखेगा तो obviously गलत thoughts आएंगे दिमाग में. Of course. And if you don't do it by, if you see my videos, उसमें बहुत स्माइल रहती है, बहुत ग्रेस रहता है, हाथ के जो भी मूव्स रहते हैं और सो इवन अगर कमर भी हिला रहे हैं तो उसमें भी ग्रेस रहता है. बहुत लोग ऐसे ही कमर हिला देते हैं. सो इफ यू वॉच शीला की जवानी, सॉरी अग्निपथ का कौन सा सॉन्ग था? कटरीना का चिकनी चमेली. उसमें भी काइंड ऑफ अ फ्लेक्सिबल, मतलब बेली डांसिंग सीखा हो गया, जो भी हो, व्हाटएवर. आई डोंट नो क्या ट्रेनिंग दी गई उसको, बट शी बिकेम फ्लेक्सिबल फॉर सम टाइम, आई थिंक. तो वो जो स्टेप्स है वो विदाउट ग्रेस है.
अगर So the setting was हाँ. such, na? या मतलब बता रहे कि अगर विदाउट know ग्रेस that. विदाउट She's just ग्रेस giving an example. सो विदाउट ग्रेस अगर किया तो इट लुक्स लाइक दैट Hmm. एंड कॉस्ट्यूम उन्होंने इतना झगमग होता है कि Hmm. ऑब्वियसली ग्रेस डाल देंगे तो इट लुक्स ब्यूटीफुल सो यस नो वल्गैरिटी No vulgarity allowed in life. यस So, one final question before we wrap this up. How are you feeling these days as such? I'm Be it feeling with great. Be it with your work, your belly dancing, or in everything, on every part of your life. After listening and implementing those spiritual things in my personal life, I like everything. Okay. Like I like my work, I like my I don't know nature. I like everything. गर्मी हो सर्दी हो कुछ फर्क नहीं पड़ता है मतलब because I have to accept नहीं I don't know मतलब रेंज को नहीं कर सकते कुछ but we cannot control that. Correct. Obviously we have to accept that. तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते ना नेचर वोंट नहीं ऑब्वियसली नहीं इट्स अ लॉन्ग टॉपिक एनीवे मतलब टॉपिक ठीक है. we have to accept what is happening. We'll do you know. a separate Yeah. part where we are discussing only nature. Yes. सो वही है कि उठने के बाद तुरंत आई थैंक माई मदर नेचर आई थैंक धरती माता बिकॉज ऑब्वियसली इतना तो कर ही सकते हैं यार पोल्यूशन बढ़ रहा है वी कैन नॉट कंट्रोल दैट बट अगेन इतना थैंकफुल तो हो ही सकते हैं यार फॉर व्हाट वी हैव. So you are happy and content. यस नॉट कंटेंटेड ऑब्वियसली उस लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा मेडिटेशन एंड मेहनत करनी पड़ेगी बट या आई स्टिल रिमेंबर 2 महीने पहले सैलरी नहीं आई थी पैसे भी नहीं थे तो 4 दिन तक गैस खत्म हो गया तो 4 दिन तक आई ओनली एट मुरमुरे एंड आई वॉज स्टिल हैप्पी. आई एक्सेप्टेड दैट सिचुएशन. सो अभी ऐसा हो गया कि हाँ एक्सेप्ट डेथ थोड़ा मृत्यु को एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल है बट एक्सेप्ट डेथ कोई भी सिचुएशन आ जाए आई डू नॉट लाइक you know shake it from inside so then stable. Death of both the things, that is you and others as well. हाँ किसी का भी जानवर हो इंसान हो प्लांट्स इवन प्लांट्स तो वो है. You have rabbits at home. चलो ठीक है तो Yeah, this is how you skip a question. Wow. How many rabbits do you have? only two female rabbits. And what are the names of these beautiful Bugs, creatures? yeah, the bigger one is Bugs and the smaller Bunny. one is yes obviously it was a foster bunny but I adopted her now. Both of them are the same color? No. The smaller one is pure white and the other one has Bunny grey is eyes and I think light grey and white color mix. Acha. Bugs is white and Neither if both of them are white and identical, to who's Bugs? Hey Bugs, no. They respond to their names. Yes, they Bugs मतलब कान ऐसे खड़ा हो जाता है उसका. अच्छा. हाँ and उसके बाद the other one her name is Chelsea. उसको लेके आई मैं and she responds. अच्छा. Respond and ऐसे देखेगी मुड़ के like she turn around yes she does. पुराने वाले बनीज को कुछ फर्क नहीं पड़ता था कुछ भी बोल दो. How long has it been since you have them? Bugs को 1 साल से ज़्यादा हो गया अच्छा. एंड शी आई मीन पेट स्टोर में ये केज में बंद थी अच्छा. लाइक एक स्मॉल केज में तो उसको मैं लेके आई तो आई थिंक 4 months हो गया होगा. Okay. 4 months या 4-5 months. चलिए. Anything you would like to say before we go regarding when, like if it's your next performance somewhere or something like that? I do have my performances in August, but I don't know where. I'm just booked. People have booked me, but when people have booked me, but don't know where. I mean, they are yet to decide the venue and all. Okay. Well, Yes. Thank you for doing this. Thank you for answering our questions. And well, guys, this has been the first episode of Interview Tapes. We were sitting here with Miss Anshul Srivastava, female belly dancer. That's my career identity. अच्छा. हाँ चलो that's a different topic. It's okay. चलो There are yeah you so many continue. different topics. Oh my. So do you have a separate ऐसा ID card भी क्या? नहीं it's okay. Maybe in the next episode or ठीक है फिर. personally Thank बता you, दूँगी. thank you for listening to us. You can follow Miss Anshul on Instagram. Oh, it's okay. I have got so many followers. I mean, you could just view my reels and Yeah, all. you That's can- it. They want to follow you. You just We're just saying you can follow her work. You can get to know what a beautiful person this is. And thank you
again, this has been Andy and Arnav with Miss Anshul. And I didn't know your real name, Anand Anand Desai. Pratap na? Singh. Oh, Pratap Singh, you're Thakur. Nice. You got Yes. It's Anand Pratap Singh. Thakur. Nahi, From Anand Aligarh? Pratap Singh Dikit. Kshatriya. That's a long. And usually, if you add my father's name, then it's Anand Pratap Singh Dikit and a couple of more other Nice. God knows what words. Yes, guys. It गोत्र was. क्या है तुम्हारा? गोत्र क्या है आपका? चलिए, Chalo, thank take you. care, guys. It was really nice talking to you guys, and I hope to do this again, maybe. हाँ अभी आप ये just Yeah. you mentioned nature And rabbits. rabbits नहीं वो the name Role, हाँ, role, yeah, identity. yeah. Yeah. identity. All right, see you guys. Bye bye. Bye bye.